वो टिपिकल वाला यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, टिपिकल लेकिन सबको समझ में आया, ये होप करता हूँ, है ना। अभी देखो कि ये 3 फीट 4 माइनस 1 फीट 6 11/16 को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब क्या ये 4 इंच जो है ये छोटी वैल्यू है, 6 11/16 ये बड़ी वैल्यू है, राइट। अब 4 से ये 6 11/16 तो माइनस नहीं हो सकती, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये 4 को ऐसा बनाना है कि ये 6 से बड़ा हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 3 फीट में से 1 फीट ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, 2 फीट बच जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये जो 1 फीट मैंने लिया था उसको अगर मैं इंचेस में कन्वर्ट करूं तो कितने इंचेस हो जाते हैं, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया मेरा, 16, करेक्ट। तो 16 माइनस 6 11/16 अब तो हो सकता है, करेक्ट। अब आप ये सोचोगे कि 16 में से 6 11/16 कैसे करूं, तो आप सबसे पहली चीज क्या करोगे, 16 इंचेस में से 1 इंच निकाल लो, जिससे 11/16 माइनस करना है आपको, ठीक है। अब 1 इंच मतलब कितना फ्रैक्शन था, 16/16 फ्रैक्शन था, बराबर। अब 16 में से मैंने 1 इंच ले लिया है, यहाँ पे 15 इंच बच जाता है। ये मेरा 15 इंच बच जाएगा। यहाँ से 1 इंच लिया जिससे मैंने 11/16 माइनस कर लिया, कितना बचेगा, 16/16 में से 11/16 मुझे माइनस करना है, बचता है 5/16। इतना तो सबको आएगा, है ना। अगर बेसिस सेम हो तो हम लोग बेस को कॉमन रखते हैं और ऊपर की वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर 16/16 है माइनस कितना था, 11/16। अब दोनों के बेस देखो, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, तो मैं क्या करूंगा, जो आंसर आएगा मेरा वहां पे बेस 16 कॉमन रहेगा और ऊपर की वैल्यू क्या है, 16 माइनस 11 कितना होता है, 5। अब मेरा क्या हो गया, 5 तो बच गया, आगे आंसर यहाँ पे 5/16, ये 5/16 आपका आंसर पहले आ जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे मेरे 15 बचा हुआ था, 15 में से -6 कितना रहेगा, 9, करेक्ट। अब ये 9 5/16 आपकी क्या होगी, इंचेस की वैल्यू आ गई। अब मेरा बचा वाला क्या है, 2 यहाँ पे बचा था, है ना, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, जिससे मैं 1 फीट माइनस करूंगा, कितना बचेगा, यहाँ पे डैश आ जाएगी और फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 फीट। आ गई वैल्यू। आपको सिर्फ जो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स जो प्राइमरी में हमने सीखा हुआ है कि हमको क्या है, अगर चीज मतलब जिस चीज से आप कुछ माइनस कर रहे हो, अगर वो छोटी है तो आपको बड़ी वैल्यू से एक वैल्यू उधार लेनी है, जिससे आपकी वो, जिससे आप माइनस कर रहे हो वो वैल्यू बड़ी हो जाए, है ना। तो सेम चीज हमने की, ये एग्जांपल भी सेम है। यहाँ पे नीचे में देखो वही करना है हमको, 1/, क्या है, बड़ा छोटा है, 9/16 बड़ा है, मैंने 10 इंच में से 1 इंच ले लिया, कितना रहेगा, यहाँ पे 9 इंच बचा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 9 बचेगा, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। अब क्या रहेगा, 1/, में से मतलब क्या है, 1 1 1 1 1/, ठीक है। अब 1 1/, में से अगर मैं 9/16 माइनस करूँ, तो अभी आप अगर सेम चीज देखोगे, बेस कॉमन नहीं है, तो 1 1/, मतलब कितना हो जाता है, 1 इंच मतलब 16/16, ठीक है, 16/16। और प्लस 1/, मतलब अगर उसको मैं बेस कॉमन करूँ 1/, का, तो कितना हो जाएगा, 2/16। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 18/16। ये मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन के लिए तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इससे और आगे जाके मतलब और अच्छे से पढ़ के आपको मतलब इतना झंझट नहीं करना पड़े, है ना, इजी वे में आप निकाल सकते। उसमें से मुझे माइनस 9/16 करना। अब देखो कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 16 बेस कॉमन रखूंगा, फिर बची रहेगी मेरी 18 में से 9 माइनस करना है, कितना बचता है, 9, 9/16 आ गया मेरा, 9/16 यहाँ पे, बराबर। उसके बाद देखो यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 में से माइनस मुझे 3 करना है, कितना बचेगा, 6 इंच, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे रखूंगा 6 इंच। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6, 9/16 मेरा इंचेस वाली वैल्यू आ गई। अब क्या रहेगी, मुझे सीधी सीधी वैल्यू है, 4 में से 2 माइनस करना है, कितना बचेगा, 2 फीट बचेगा। आगे आंसर, ये चीज सबको समझ में आ गई, है ना। 1 मिनट दे दो मुझे।
ओके ठीक है। आप लोगों ने कल का वीडियो मैंने जो आपको भेजा था, जो पुरानी रिकॉर्डिंग थी, आप लोगों ने सबने देखा? मॉड्यूल 2A के लिए मैंने बोला था। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो आप लोगों ने सबने वीडियो देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा। अब क्या है कि ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं जो आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ ना, वही वीडियो जैसे आप लोगों ने सबसे मॉड्यूल 1 का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था, वैसे बहुत सारे वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि वो वीडियो आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं, क्योंकि वो वीडियो आपको पहले देखना है, उसके बाद मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। अब वो वीडियो है 30-45 मिनट, कुछ कुछ 1-1 डेढ़-1.5 घंटे की वीडियो है। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ वो वीडियो क्योंकि आपके पहले जो वीडियो देखने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। मतलब क्या है कि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो उसके बाद क्या है, मैं पीडीएफ से आपको सारी चीजें समझा सकता हूँ। अब क्या है कि अगर मैं वीडियो स्टार्ट करवा दूं तो 45 मिनट तक या फिर आधे घंटे तक मेरा चेहरा दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको वीडियो दिखना पड़ेगा। तो वैसे करूँ क्या, मतलब वैसी प्रोसीजर आपको चाहिए होगी, तो हमारे जो सेशंस रहेंगे वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे के चलेंगे, या फिर उससे ज्यादा भी। आप लोग सारे वीडियो एक बार ऑन करो। सब लोग ऑन करो। ब्रिजेश आयुष, ब्रिजेश कहाँ पे? आपको आवाज आती है क्या, या फिर आपके यहाँ पे मतलब जो भी है इंटरनेट वो अच्छा है? क्योंकि क्या है, अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग से करोगे, तुम्हारी आवाज मुझे अटक अटक के आ रही है। अगर क्या है, वीडियो आपको फिर मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूँ उस टाइम पे अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो कोई फायदा नहीं रहेगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग के भरोसे रहना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो भी वीडियोस है ना, अभी जैसे मैंने वो दिखाया कि आपको रिकॉर्डिंग्स रहेंगी जो टूल की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब एक थ्योरी की रिकॉर्डिंग है। अगर मैं वो रिकॉर्डिंग आपको, रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ वो क्लासेस है, थ्योरी क्लासेस है, तो अगर वो वीडियो आपको चलाने दूं तो वो अमेरिकन एसेंट में रहेगा, आपको पूरा 1 घंटा सिर्फ वीडियो ही दिखाऊंगा। वो वीडियो आपको पहले समझना है, क्योंकि मैं वीडियो रुका रुका के आपको वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना। इसलिए मैं आपको जो प्रीवियस बैचेस को सिखाया वाला वीडियो है वो आपको शेयर करता हूँ एक दिन पहले। इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप एक बार सिर्फ उसको समझ ले, तो क्या है कि मैं आपको पीडीएफ में से वो सारी चीजें समझा दूंगा। क्या है कि ये बेसिक जो टेक्निकल टर्म्स है आपको पीडीएफ में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, और मैं आपको थोड़ा ज्यादा वक्त दे सकता हूँ, है ना। क्या है कि पुरानी बैचेस को मैं क्या करता था कि आप पहले जो वीडियोस मिले हैं हमको, वो वीडियो शो करता था, वो पूरे वीडियोस देखते थे, फिर उसके बाद में उनको पीडीएफ में एक्सप्लेन करता था। अब क्या हो जाएगा कि आपको मैं वीडियो दिखाऊं फिर उसके बाद पीडीएफ समझाऊं, तो शायद आपको थोड़ा कम समझ में आए। तो इसलिए मैं होप करता हूँ कि आगे से आप वो वीडियो देख लिया करो, जो मैं एक दिन पहले शेयर करता रहूंगा, है ना। और फिर उस पर हम लोग पीडीएफ से मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, तो आप अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको 2.5-3 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा, वो चलेगा क्या? आप आपकी कंडीशन बताओ, मैं वैसे सिखाऊंगा। आज मैं आपको एक शेप का वीडियो चला के दिखाता हूँ, वो एक बार आप देख लो, ठीक है। आपको अगर वो अच्छा लगे उसके बाद मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। अगर वो दोनों चीजें आपको अच्छी लगती है, जैसे मैंने पुरानी बैचेस में की है, तो हम लोग वैसे ही फॉलो करेंगे। तो मैं आपको जो ओल्ड रिकॉर्डिंग्स है वो भेजता नहीं रहूंगा, है ना, वो सेंड नहीं करूंगा, आपको फ्रेश पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप आज एक बार ट्रायल देख लीजिए, है ना, 1-8 घंटे का वो वीडियो होगा, वो समझ लेना, और उसके बाद फिर हम लोग, मैं आपको पीडीएफ सिखा दूंगा, ठीक है। आज के लिए ट्राई करते हैं। क्या है कि आप कंटिन्यूस बैठना पड़ेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसकी वो लैंग्वेज सुननी पड़ेगी, ठीक है।
ठीक है, मैं वीडियो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो शेप्स के रिगार्डिंग है। मतलब अभी स्टील डिटेलिंग में कौन कौन से शेप्स यूज होते हैं, मतलब आप जब कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग आपके पास आएगी तो कौन सा शेप रहेगा, है ना, कि कौन कौन से शेप्स आपको इंट्रोड्यूस होंगे बिल्डिंग्स में जो आपको देखने हैं, है ना। अगर कोई डब्ल्यू शेप दिखता है, कोई एस शेप दिखता है, वो कहाँ पे यूज होता है, डब्ल्यू शेप कहाँ पे यूज होगा, एस शेप कहाँ पे यूज होगा, मेनली पाइप्स कहाँ पे यूज होंगे। उसके बाद आपको कुछ प्लेट्स दिखेंगी, फिर एच एस एस दिखेंगे, है ना, डब्ल्यू टी, एम टी, ये सारी टर्म्स आपको इस वीडियो में दिखने वाली है। तो क्या है कि स्टील बिल्डिंग जब बनती है तो इन सारे चीजों का यूज होता है। तो मेनली ये चीज कहाँ पे यूज होने वाली है, ये चीज भी आपको यहाँ पे दिखेगी। आगे जैसे मॉडल से हम लोग पढ़ेंगे, कॉलम्स, बिम्स की ये मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा चीज में पता चलेगा। लेकिन बेसिक शेप कैसे होते हैं, शेप की प्रोफाइल कैसी होती है, डायमेंशन, किस डायमेंशन को हम लोग, मतलब जब आप डब्ल्यू शेप की प्रोफाइल देखोगे तो उसकी टर्म्स को क्या बोलेंगे, है ना। जो ऊपर में आपको जैसे मैं दिखाता हूँ, आई जैसे शेप दिखाता हूँ, राइट। तो आई शेप में जो आई वाली हॉरिजॉन्टल जोन लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल जो बीच में लाइन आती है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं। फिर जब कर्व बनेगी बीच में उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शंस में क्या चीज आती है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज आपको पता चलेगी। तो शेप्स में ये सारी चीजें भी रहेंगी। तो इस वीडियो में थोड़ा बताया हुआ है, आप ये वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ से सारी चीजें समझा दूंगा। Many different types of raw materials are used when a structural steel building is being erected. The steel industry provides many different sizes and shapes of structural steel, which can be used by architects and engineers in the design process. The structural steel is produced at rolling mills and shipped to fabrication shops where the material is cut to size and connections attached so it may be erected in the field. This material produced at rolling mills is called plain or raw material. The raw materials are designated by their cross-sectional shapes. These shapes should be memorized by the structural drafter. The first shape to be discussed will be the W shape, short for wide flange. The W shape is the most commonly used structural shape. Structural shapes such as these have two major surfaces. One is called the flange, shown as B sub F and T sub F dimension, and the other is called the web, shown as the T sub W dimension. The designation W18 by 35 would indicate a W shape. The 18 indicates the depth is approximately 18 inches. The actual depth is 17.7 inches. The 35 indicates the weight per foot in pounds. Generally, the depth shown in the designation is called a nominal depth. You will need to refer to the Manual of Steel Construction, Load and Resistance Factor Design, which is referred to as LRFD, for the exact depth. The nominal depth is usually within 1/2 inch of the actual depth, but there are some exceptions. W14 by 426 has an actual depth of 18.67 inches. The steel detailer must keep this in mind when detailing a project. The S shape will be the next shape discussed. It is commonly called the American Standard Beam,
or may be referred to as the I-beam. These sections were the first beam sections rolled in America and are not used for beams and columns in today's buildings, but are used for special applications such as monorails and crane runways. These shapes are still available, but are not generally stocked by the fabricator. Refer to your manual of steel construction to see what sizes are available. The Manual of Steel Construction lists all the shapes and sizes that can be produced, but many of these shapes and sizes are not readily available. The beginning detailer should consult with the chief drafter to learn what shapes and sizes are not readily available in your area. Whenever possible, materials which are not readily available should be avoided because their use could hold up a construction project for days or weeks if they cannot be obtained in a timely manner. Notice on the S shape, the inside face of the flange is sloped. The size is designated like the W shape. For example, an S12 by 35 would indicate an S shape. The 12 indicates the depth, and the 35 indicates the weight per foot in pounds. The depth in this case was exactly 12 inches deep. As with the W shape, generally the depth shown in the designation is a nominal depth. You will need to refer to the Manual of Steel Construction for the exact depth shown in the depth column. Notice an S20 by 96 is 20.3 inches deep. The HP shape is similar to the W shape, except that the web flange thickness are equal and are thicker than the W shape. Notice on the HP 12 by 84 shown that the depth is 12¼ inches, the flange width is 12¼ inches, and it weighs 84 pounds per foot. The thickness of the web and the flange are both 11/16 of an inch. These HP shapes are primarily used as pilings in foundations. The HP shape's heavy webs are made to resist the impact of the pile-driving hammers. The C shape, or American Standard Channel, consists of a web and two tapering parallel flanges. These members are used in steel stair systems and many other miscellaneous locations. Their flanges are relatively narrow, ranging from 1 3/8 inch to 3 3/4 inch, and depths from 3 inches to 15 inches. These members would be designated on a plan similar to a W shape. For example, the C10 by 15.3 on the stair framing plan is indicated with a capital C for the shape. 10 indicates the depth of exactly 10 inches, and 15.3 for the pounds per foot. The MC shapes are referred to as miscellaneous channel sections and are very similar to the C shapes. The only real difference is the width of the flanges and the flange slope. Their flanges range from 1½ inch to 4¼ inches, and depths from 6 inches to 18 inches. For example, a C10 by 30 has a flange width of 3 inches, and an MC10 by 28.5 has a flange width of 4 inches. The M shapes are basically lightweight W shapes. These shapes have relatively narrow flanges ranging from 1 7/8 inch to 5 inches. Check the availability of these shapes. The L designation is a section called an angle. The angle is shaped like an L with horizontal and vertical legs at right angles to each other. The angle sections may have legs of either equal or unequal length. Notice you will have both of these grouped together in descending order. In an L8 by 6 by 1/2, the L designates it as an angle. 8 indicates one leg of the angle,
is 8 inches, and the other leg is 6 inches. The 1/2 indicates the thickness of both legs. When specifying an unequal leg angle, the long leg is always specified first. Structural T's are indicated as WT, MT, and ST shapes. T shapes are made by splitting a W, M, or S-shaped section longitudinally at mid-depth. For example, a WT9 by 25 indicates a structural member cut from a W18 by 50. Notice the flange size and thickness are the same, and the thickness of the stem is the same thickness as the web. The stem is the web portion of the W shape. It is called the stem because it is not the full web member. The WT section is the most commonly used structural T. Structural Ts are commonly used in trusses, various connections, and in lintels. The student should recognize the inside corners are not square on these various shapes. As these examples show, the inside corners are radiuses, and the radius is the same for each shape group. These shape groups are divided by the white space between sizes. Notice the T dimension is constant for each group. Where this radius starts on the web and flange is shown in the diagram on top of the page for each shape. The K distance indicates the start of the radius on the web, and the K sub 1 distance indicates the start of the radius on the flange. Some shapes will only have a K dimension. These K distances will be a very important issue in the later modules as you begin to detail these steel shapes. A steel pipe may be designated by the letter P. A pipe, such as the pipe column shown, is designated as PIPE 3 inches STD, which would mean the pipe is approximately 3 inches in diameter on the inside. The actual outside diameter is 3.5 inches, and the inside diameter is 3.068 inches. Steel pipes are available in 3 weights: standard, extra strong, and double extra strong. The difference between the 3 are in their wall thicknesses. Notice the inside diameter of a 3-inch pipe of standard weight versus the double extra strong. There is approximately a 3/4 inch difference. Also notice the outside diameter remained 3.5 inches in all 3 strengths. The structural steel tube is designated as an HSS shape, which stands for hollow structural section. The former designation was a TS shape. You will find many architects and engineers will still refer to these tubes as TS shapes. Notice how this HSS 4 by 4 by 3/8 column is being called out on a structural plan. The 4 by 4 indicates it is a square HSS, 4 inches by 4 inches, and the wall thickness is 3/8 inch. The last 2 structural materials are plate, referred to as PL, and flat bar, referred to as FLT or bar. Bar is most common in the fabrication industry. These 2 materials are classified by their size. The LRFD manual designates bars and plates depending on their width and thickness, as described on page 1-133 in your LRFD manual. Usually, flat material under 1/8 inch in thickness is referred to as sheet material, and its thickness is given by its gauge. Sheet material is not usually provided by the structural fabricator.
It is a preferred practice to call out steel plates in quarter-inch increments in width and eighth-inch increments in thickness. There are various plate mills throughout the United States. Consult your local supplier for sizes available in your area. The preferred increments for width and thickness are shown at the bottom of pages 1 through 133 of the LRFD manual. The detailer must verify with the supplier on the availability of the material desired in both width and thickness. The width is not a critical factor because the plate may be cut to the desired width in the fabrication shop. Even though 1/32 inch thicknesses are shown on page 1-133, they may not be readily available and therefore may not be economically used. This chart indicates the various thicknesses that may be produced. The correct designation of a steel plate 16 inches square and 1/2 inch thick is PL 1/2 by 16 by 1 foot 4 inches, while a 6 inch by 10 inch piece cut from flat bar stock 1/2 inch thick would be designated as BAR 6 by 1/2 by 0 feet 10 inches. Mill tolerance is a term used to describe the permissible deviations from the published dimensions of cross-sectional profiles listed in the Manual of Steel Construction, mill catalogs, or specified by the purchaser. These variations are negligible in small shapes, but increase in larger shapes. Mill tolerances permit some variation in cross-sectional area, weight, permissible variations in cross-section, camber, and sweep, as shown on pages 1-187 and 1-188 of the LRFD manual. This is a very important issue for the steel detailer and will be discussed more in depth at a later time. The detailer should also be aware that the members being drawn are shown perfectly square, but in reality this may not be the case. As the diagrams indicate on page 1-188 of the LRFD manual, these flanges and webs may not be perfectly square or the web may not be perfectly centered. These variations usually become more noticeable in large members. One major factor causing these variations is the gradual wearing of the rolls, which can result in some weight increase. Permissible variations for plates and bars are discussed in Table 1-18 through Table 1-20 on pages 1-196 through 1-198 in your LRFD manual. A more in-depth discussion of mill tolerances and practices can be found in ASTM A6 Standard Specification for General Requirements for Delivery of Rolled Steel Plates, Shapes, Sheet Piling, and Bars for Structural Use. Structural steel is produced in a variety of strengths, which are called grades, in order to accommodate a variety of conditions encountered and specified by architects and engineers. Structural steel is composed almost entirely of the element iron. Small portions of other elements, particularly carbon and manganese, must also be present to provide strength and ductility. Structural steel is available in several different grades. These grades are measured by a term called yield strength. In a later module, yield strength will be discussed in greater depth. These various grades of structural steel are identified by the American Society of Testing and Materials, commonly referred to as ASTM. Now we will discuss some of the common material grades used in structural steel. ASTM 992 is an all-purpose carbon steel with a yield strength of 50 KSI, or 50,000 pounds per square inch of cross-section. KSI is defined as kips per square inch. A kip is 1,000 pounds. This grade is only available for W shapes used in building construction and replaces ASTM A36 and ASTM A572, grade 50 for W shapes.
You will not find this grade listed on pages 1 through 15 of your LRFD manual because it was not yet available when this second edition was printed. This grade will be the most popular grade because of its availability and cost effectiveness. ASTM A36 is an all-purpose carbon steel and has been widely used in structural steel for commercial and industrial building construction and bridges. This grade of steel has a yield strength of 36 KSI and is a common grade for steel shapes other than W shapes used in building construction and steel plates. The next unit to be discussed will be a review of 3 basic drafting principles, which are reading an architect's scale, orthographic projection, and isometric projection. Now we will move into a review of orthographic projection. Orthographic projection is a method of representing the exact shape of an object by dropping perpendiculars from 2 or more sides of the object planes, generally at right angles to each other. The 3 most common views are top, front, and end view. The number of views shown will vary depending on the complexity of the item. In steel detailing, you may only need to show the front view if everything can be explained on this view, or 2 views may need to be shown, usually the front view and the end view. To help understand orthographic projection and its viewing planes, use an imaginary, flat, transparent surface similar to a pane of glass. As shown, this front view is placed parallel to the surface of an object. The surface of the object parallel to the plane is shown in its true size and shape. In the top view, the upper surfaces represent the face of the object that is parallel to the viewing plane. The cross-hatched portion represents the surface of the object that is sloping and therefore is not parallel to the viewing plane. As a result, this surface is not shown actual size. In this case, the lines representing the edges of the piece are shown closer together than their actual size. Again, in the end view, the surface of the angle is sloping with regard to the viewing plane, and the lines representing the piece are closer together. Notice the hidden or dashed lines indicating a surface behind another surface. These hidden lines should not be shown as dark as your object lines. Symmetrical or cylindrical objects can usually be limited to 2 views as shown. As in this drawing, the top view would only duplicate the front view. The architect's scale is used to make and read drawings related to the construction industry where measurements are made in feet and inches. When using the architect's scale, the first point to notice is that it does contain a full scale for drawing items to their true size. This scale is divided into 1/16 inch increments. The other surfaces of the architect's scale each contain 2 scales. One scale will read from the right end and the other from the left. Upon examination, it can be seen that in every case the 2 scales shown on the same surface are in a direct 2-to-1 proportion to the other. For example, the 1 inch equals 1 foot 0 inches and the 1/2 inch equals 1 foot 0 inches scales are on the same line but read from opposite ends, as do the 1/8 inch equals 1 foot 0 inches and 1/4 inch equals 1 foot 0 inches, the 3/8 inch equals 1 foot 0 inches, and 3/4 inch equals 1 foot 0 inches, etc. Notice that on the architect's scale, all of the scales other than the full scale are divided into feet along their entire lengths, except at the end, where in each case the foot is divided into fractions of an inch.
The fractions of an inch proportion of the scale will vary depending on the scale being used. Another popular grade of steel is ASTM A572. Like A36, this grade is used in structural steel for building construction and bridges. This high-strength, low-alloy steel is available in 4 tensile stresses, which are listed in page 1-15 of your LRFD manual. The 50 KSI grade has been replaced by ASTM A992 for W shapes in buildings, but is still used for W shapes in bridges and for other shapes and plates in building construction. ASTM 588 is a corrosion-resistant, high-strength, low-alloy steel with a yield strength of 50 KSI. This steel is called a self-weathering grade of steel. This weathering characteristic is made possible by the small amount of additives that are used in making this steel. When this steel is exposed to the atmosphere, the steel oxidizes and produces a thin film of reddish-brown rust called a patina. This film of rust, which is only a few thousandths of an inch thick, prevents further oxidation or rust, which eliminates the need for paint. Isometric projection or pictorial drawings can also be used to relay information from the drafter designer. The following examples show how isometric drawings can be used to help clarify and explain complex information related to construction. Today, many computer programs will develop a 3D model of what is being drawn, which can be rotated around to help the designer visualize what is being drawn. Isometric drawing is a process of showing 3 basic views of an object: top view, front view, and end view, all in one drawing. When creating an isometric drawing, you must first draw an isometric box to the overall width, height, and depth. The baselines for the front and end views are shown as 30-degree lines and are drawn to true length. The lines indicating the height of the object are drawn as vertical lines and also drawn to true length. Once the construction lines are established, the outline of the object is developed within the construction lines as shown. Once all the construction lines are completed and the corners established, the object lines are darkened and the construction lines are erased. ठीक है, आप लोग आपकी वीडियो स्टार्ट कर लो 1 मिनट के लिए। तो ये एक्चुअली मॉड्यूल 2 का वीडियो था जहाँ पे आपको शेप, आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, राइट, इसमें आपको एआरएफडी की बुक के बारे में बताया गया है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि एआईएससी का मैनुअल है, अभी एआईएससी मैनुअल जो अभी 15 एडिशन चल रहा है, ये जो वीडियोस है ये काफी पुराना है, इसलिए वहां पे एलआरएफडी मैनुअल की बात की गई है। तो वो जो एलआरएफडी मैनुअल की वो बोलता है, तो आपको वहां पे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं कि एलआरएफडी मैनुअल आपको पता होना चाहिए कि उसमें कहाँ पे क्या है ना। ये सारे जो चीजें हैं, जो जितने भी शिफ्ट है, शिफ्ट की इंफॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी मतलब आप जहाँ पे भी काम करोगे उनके सॉफ्टवेयर में ये ऑलरेडी लोडेड रहता है ना। मतलब शिफ्ट की पूरी फाइल, जो मटेरियल फाइल है, वो सारी लिस्टेड होती है। आपको जब आप मॉडल में काम करोगे तो मॉडल में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करके आपको सिर्फ शेप लेना है, आपको इनपुट करना है, ऑटोमेटिकली वो मटेरियल फाइल से रीड हो जाएगा। मतलब आपको उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब डेप्थ कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीजें बताई गई है कि शेप्स कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, है ना। या फिर जैसे वो चीज बताई उसने कि टेबल में कौन सा रिडक्शन कितना होना चाहिए, मिल टॉलरेंसेस क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें दी हुई है मैनुअल में, सारी चीजें दी हुई है। अभी एएससी मैनुअल जो है उसमें पहले शेप से शुरुआत होती है, फिर वेल्ड से, सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है।
आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एएससी मैनुअल में वो कहाँ पे होती है। अभी आप जैसे जैसे मॉडल में आगे बढ़ते जाओगे सारी चीजें आपको बताई जाएगी, मॉडल्स में दिखाया जाएगा कि एएससी के या फिर एलआरबीटी के मैनुअल की कौन से पेज पे कहाँ पे वो चीज दी हुई है। ठीक है, आपको सिर्फ वो ध्यान देना है, आपको पूरा मैनुअल पता होना चाहिए ये जरूरी नहीं। ये सारी चीजें आपकी मटेरियल फाइल में, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे वहां पे मटेरियल फाइल में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो मटेरियल उसने बताया है ना, जो शेप्स उसने दिखाए थे, डब्ल्यू शेप, फिर डब्ल्यू टी, एस, पाइप, एल शेप, फिर क्या बोलते हैं उसमें प्लेट, बार, ये सारी चीजें दी हुई थी, राइट, सी शेप। तो ये सारी चीजें आप एक बार वीडियो में देख लेना, इंक्रीमेंट कितने होने चाहिए, मिल टॉलरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें एक बार अच्छे से देखना, फिर मैं कल आपको पीडीएफ में से वो सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, हम लोग यही इस वे से जाता हूँ, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी शेयर नहीं करूंगा। अभी जितने भी मॉडल्स हैं मैं आपको पहले ये मॉडल से दिखाया करूंगा, उसके बाद जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है ना, वो फिर मैं आपको पीडीएफ से समझा दूंगा। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, ये शेप्स के बारे में बताऊंगा। फिर मॉडल 2 का 2B और 2C हम लोग परसों देखेंगे। कल मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें 2A पे, और फिर 2B और 2C में कौन सी ड्राइंग यूज होती है, क्या होता है, एबीएम, बिल ऑफ मटेरियल, फिर इस पे जाएंगे। ये रिपोर्ट से हम लोग 2B और 2C में रहेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? अभी 10 मिनट है मेरे पास, अगर कुछ डाउट होता है तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आपको पुरानी जो रिकॉर्डिंग वो चाहिए नहीं चाहिए, है ना? क्या है कि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग उसको, आपके पास वक्त है तो उसको पढ़ो, मतलब उसको देखो, है ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो मैं वो भी देखूंगा शेयर करने के लिए, तो उनको देखा करो, और आपकी खुद की जो रिकॉर्डिंग थी, जो सेशन खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग रखता हूँ उसको अलग रख कर दिया करो पुरानी रिकॉर्डिंग्स। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करूंगा, और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी शेयर कर दिया करूंगा। तो क्या है, आपको पता रहेगा, एक दिन पहले ही आप उसको अगर देख लेते हो तो ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्या है कि जैसे जैसे मॉडल में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। हम लोग फिर कल शिफ्ट के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, तो उसके बाद आपको शिफ्ट पूरे तरह से आने लग जाएंगे। ठीक है, चलेगा, चलो, गुड नाइट।